JNM Professor Dr. Uday Sanilkar to please felicitate Mrs. Fatnavis, and thank you, ma'am, for actually being here. Thank you, please. And it's more token of appreciation from our end. On this moment, I'd also like to invite Mr. Gul Kriplani, a compassionate humanitarian and a phenomenal philanthropist, to come up on stage, ladies and gentlemen. A huge round of applause for Mr. Gul Kriplani. And last but not least, I'd like to call Ms. Archana Kochar. Couture Archana Kochar has been showcasing her collection on national and international runways. She's designed for the Peace collection today in Peace Walk. A huge round of applause for the lady who's got all the stars dancing and dressing for her dance. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for the special guest. Thank you, everyone. And now we have Mrs. Fatnavis with her, okay, and the other dignitaries as well, to please light the ceremonial lamp. Thank you. अभी नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो अभी नहीं हो सकता। Thank you. I request the dignitaries to be on the stage to get back on their seats. Mrs. Fatnavis, ma'am, can you please tell us, share with a few words with us? Respected dignitaries, Dr. Salud, Director of the Electoral Institute, Ambassador Mr. Thorer, Representative of Iceland, District Governor Mr. Gopal Mandhanaya Rotary, Chairman of Global Peace Initiative Mr. Gul Kriplani, thank you, sir, for having me today. Archana Kochar, thanks for this lovely dress which I have worn today. Other dignitaries and dynamic students who have organized this meaningful event, and my dear friends. I am indeed happy to associate myself with the biggest celebration of peace in the world, Global Peace Initiative, organized with the Phoenix spirit to retain peace, a very important moral for attainment of happiness and harmony in human society. It is commendable that One Life Alliances has been organizing this award since last 4 years and had eminent personalities like Rajshri Birla ji, Sunil Gavaskar ji and Sania Mirza in the past. I congratulate the V School for being the knowledge and venue partners for this great initiative. The Nigerian human rights, civil rights and democracy activist Hasta Abiola says about peace, that peace comes from being able to contribute the best that we have and all that we are towards creating a world that supports everyone. But it is also securing the space for others to contribute their best and what they have at their best. The attainment of this peace has always been a desire of the society in all periods of history and at all levels among different nations. Considering the fact that development of society is impossible without preservation of peace, all the members of international community, including United Nations and specialized agencies, several global and national level human rights movements have been consistently and strongly advocating the promotion of peace against war. It's the need of the hour that international objectives must be set by all countries to defend peace against increasing terrorism by terrorist organizations and other agencies disturbing harmony of the human society. Currently, the attempts being made by various nations to defend peace include people and goods,
different cultures and so on. People have begun focusing their attention on the need for protection of human rights, protection of environment, and securing of real and meaningful international integration. However, several negative factors like ethnic conflicts, ethnic violence, ethnic wars, terrorism, in its several dimensions, keep on acting as a big hindrance towards the same. Over the last several years, forces that want to spread turmoil and fear have made this small word, war, an important part of our daily life, so much that we no longer find it hard to hope that a normal working day passes peacefully. The Mumbai terror attack of November 26, 2008 was also an attempt to blast the peace out of our lives. We were expected to be in shock and confusion, afraid and scattered. And so we were. We lost people we loved, we lost friends. People were killed mercilessly, and even an ordinary daily commute to work became a source of fear. But although the people of the city and friends from all over, they never say die attitude and spirit showed the attackers that the worst cannot keep us down, but damage was still made. Friends, we need to understand that world peace can be achieved when in each person the power of love replaces the love of power. And I'm confident that the initiatives like Peace Walks and Global Peace Awards will help society in retaining the values that nurture peace and harmony. Before I wrap up, I would just like to say that there is no alternative to peace, and if it prevail all over the world, then only our civilization has some chance. And here we must all remember following words of John Lennon. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. May peace prevail. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, ma'am. It's our honor that... Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Thank you. Ma'am, can you please say a few words? I count on this as a really great honor and also a reminder that we have a lot of work to do. When you look at the world around you, there aren't just instances of massive violence, but there's also a lot of microaggression. Think about how you can spread peace in every little thing you do in your everyday life, and you could make the world around you a more peaceful place. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ladies and यार बाइक का भी थोड़ा थोड़ा ट्राई कर स्टार्ट मैम सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ग्लोबल लेवल पर लिया गया है इस इनिशिएटिव के बारे में ग्लोबल पीस अवार्ड्स ये 26/11 के एक दिन पहले इन्होंने चालू किए 4 साल पहले और ये जो अवार्ड्स है ये जो लोग हैं जिन्होंने छोटे या बड़े अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने देश में शांति सुख और लोगों के लिए अच्छाई करने के इनको इसके थ्रू प्लेटफॉर्म मिला है, इनको अवार्ड्स मिले हैं। इससे ये खुद तो मोटिवेट हुए ही है पर बाकी लोगों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिला है कि वो भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे सुख शांति लोगों में पैदा हो और फैले। जी मोदी जी ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो मतलब काले धन को बाहर निकालने के लिए और डीमोनेटाइजेशन को लेकर तो उस बारे में क्या आपका क्या राय है? दिक्कतें आई है नोटबंदी के बारे में मुझे ये लगता है ये ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें एक निर्णय ने 3 चीज़ों को एक साथ टारगेट किया है। ब्लैक मनी हो, टेररिस्ट मनी हो या ये जो फौज नोट्स घूम रहे हैं ये सब एक साथ टारगेट हुए।
हाँ, क्योंकि ये अचानक लिया गया डिसीजन, उसके पीछे भी रीजंस है। उसकी वजह से तकलीफ़ें हम सबको ज़रूर हुई, मुझे भी हुई, हर एक को हुई। बट ये तकलीफ़, इन चीज़ों को टारगेट करके इनका निर्मूलन करने की जो इनकी ये वजह है, उसकी जगह कुछ भी नहीं है ये तकलीफ़ें। इसके अलावा जो 26/11 में जो हमारे जो जवान शहीद हुए या फिर पुलिस वाले शहीद हुए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कितना इमोशनल मोमेंट है जो आज का जो अवार्ड जो उनके लिए किया गया है? ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। ये ना वो याद करके भी वो दिन रोंगटा खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो अटैक्स हुए थे, इन्होंने हर टाइप की सोसाइटी को टारगेट किया था, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो। मुंबई का हर इंसान उसमें फंसा, चाहे डर के या सफ़र करके। पर मुंबई ने एक यूनाइटेड फ्रंट सामने लाया, बहुत स्पिरिटेड तरीके से उसके खिलाफ मुंबई ने भी लड़ाई की और दिखा दिया अटैकर्स को कि नेवर से डाई एटीट्यूड है हम में। आप बताइए, आप भारत बंद में हैं? मैं नहीं हूँ। तो जो तैयार है थोड़ी सी तकलीफ सहने के लिए और एक उज्जवल भविष्य के लिए, वो भारत बंद नहीं होने देगा। मी या अवॉर्ड सेरेमनीसाठी ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्हसाठी आली आहे. याच्यात खूप सारे जे लोक आहेत त्यांना अवॉर्ड दिला गेला, ज्यांनी छोट्या आणि मोठ्या प्रकारे आपल्या देशाच्या लोकांसाठी खूप काही केलं आहे. देशात पीस, शांतता आणण्यासाठी खूप काही इनिशिएटिव्स केलेले आहेत. तर अशा अवॉर्ड्समुळे मोटिवेशन त्यांनासुद्धा मिळतं आणि जे लोक हे अवॉर्ड्स पाहतात त्यांनाही वाटतं की आपण इन्स्पायर होऊन काही करावं सगळ्यांसाठी. हा जो हल्ला होता हा मी टी व्हीवर पाहिला होता नागपूरहून, आणि काटे उभे राहिले मला. आधी आठवण करून मला काटे उभे राहतात की असं कोणी अशा टाईपचे अत्याचार करू शकतो. आणि हे जे टेररिस्टनी केलं आहे, जे केलं होतं, ज्याच्यानी मुंबई पूर्ण हल्ली होती, पण मुंबईने खूप छान लढा दिला या सगळ्या टेररिझमला. नोटबंदीविषयी तुमचं काय मत आहे? अनेक विरोधक आहेत ते विरोध करत आहेत नोटबंदीवर. लास्ट क्वेश्चन काय? मी हे सांगेन की नोटबंदी आपल्याच पंतप्रधानांनी, आपल्याच शुभचिंतकांनी हे विचार करून केलेला आहे की काळा पैसा कमी व्हावा, संपावा, फोर्ज नोट्स कमी व्हावे आणि टेररिस्टकडे जे ह्या सगळ्या नोटा डांबलेल्या आहेत त्या एक्सटिंक्ट व्हाव्या. तर याच्यासाठी आपल्याला थोडासा त्रास होईल, तो सहन करावा. आणि जोही या कार्यासाठी प्रयत्नशील आहे की आपला देश सुंदर व्हावा, सुजलाम सुफलाम व्हावा, त्यांनी पूर्णपणे या कार्याला साथ दिली पाहिजे. खारघरमध्ये एका लहान मुलीला प्ले ग्रुपमध्ये अमानुषपणे मारहाण करण्यात आली आहे, तर याविषयी तुम्हाला काय वाटतं? त्याविषयी मला अत्यंत खेद आहे आणि त्याच्यात बरोबर जे काही करायचं ते जरूर केलं जातं आणि केलं जाईल. थँक्यू सो मच. Roll on the floor with master, talented actor, Adar Malik. Walks for peace. Once again for Adar Malik. Actor, model, popular youth shows like Love Tune Kya Kiya, Best Friends Forever, and Karatika, the beautiful and gracious Fede Lumbriga walks for peace.